जी हम पहले मैंग्रोव्स का टूर जो है हमने किया था फिलिपाइन में। आज जनाब दोबारा रिजवान साहब जी और हम जनाब पहुंच गए हैं ज़ंज़ीबार के जंगलों में मैंग्रोव्स का टूर करने के लिए हैं। हमें भी चैन नहीं है, हमें भी चैन नहीं है। हम बार बार फिलीपीन के मैंग्रोव से लेके हाँ जी आज ज़ंज़ीबार के मैंग्रोव्स तक कट्ठे चल रहे हैं, जंगलों में, समुद्रों में, सड़कों पे। दरिया भी ना छोड़े, घोड़े हमने, क्या बात है। मैंग्रोव्स का हाँ ये देखे ना जी, इन्होंने पुरानी वो जो नेचुरल होती है चीज़ें वो बिल्कुल प्रिजर्व की हैं। मैंग्रोव्स ये देखे ना, पानी है जो नेचुरल ग्रोथ है, ये मैंग्रोव्स जनाब। ये देखें मैंग्रोव्स, और ये इसके अंदर इन्होंने वुडन जो है वो पैसेज बनाया हुआ है और नीचे जो है वो। लेकिन जनाब ये दोस्त आ रहे हैं और उनको जनाब बड़ा ज़बरदस्त मैंग्रोव्स में से गुजरते हुए, क्या खूबसूरत लोकेशन है। लेकिन जनाब ये मैंग्रोव्स में से अंदर से ये जो नेचुरल पानी है, और ये देखिए रूट्स जहाँ ग्रो हुई होती हैं इस तरीके से, इनको बिल्कुल छेड़ा नहीं जाता, जो भी इसके अंदर होता है वैसे ही रहता है। ये फिलिपाइन में भी हमने देखा था वाकई जी। अब ये देखें ना, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसी बेशुमार जगह हैं जहाँ पर इस तरह की जो है हिस्ट्री वो मेंटेन की जा सकती है और लोगों को टूरिज़म के लिए। लेकिन हमारे तो हाँ दरख्त ही कट जाते हैं, चाहे वो केपी के हो, पंजाब हो, कोई भी जगह हो, हमारे तो हाँ दरख्त ही नहीं रहते। यहाँ पर देखें इन्होंने हिस्ट्री को किस तरह से प्रिजर्व किया हुआ है, टूरिस्ट्स के लिए ओपन किया हुआ है। नहीं जी, मैंग्रोव्स टूर में हमारा जो ग्रुप है वो सब बैठ के जनाब। Okay, so this peaceful place is called mangrove swamp or mangroves. Mangroves are very special trees that grows along the coast and the coastal lines in salt water or brackish water. Brackish water, of course, is a mix of water, salt and fresh. However, in this area we have pure salt water from the ocean. And this is actually in intertidal area. Normally there's tidal movements, right? There's high tide and low tide. Now it is low tide, but in the high tide this whole area will be submerged underwater. Most of the small plants and the roots will be under the water in the high tide. And there where we took pictures, that's the main channel which connects the mangrove forest and the ocean, which is 3 kilometers to the south. So that's where the water comes in and goes out in the high tide and low tide. There are many species of mangroves found in the tropical and subtropical countries, from Southeast Asia, in the Caribbean, West Africa, East Africa, and etc. So here in Zanzibar we have 10 different species, 3 of which we find here in Jozani in this area. Okay, let me show you. This is called surreal, known as the yellow mangrove in common name. This is called Mabira gymnorrhiza, common as the black mangrove. That over there with very long roots, that's the most common, Rhizophora macronata. That is the red mangrove. देखें जी इसकी रूट्स जो हैं वो किस तरह से ज़मीन में, किस तरह से उसने जाल बिछाया हुआ है ऊपर से शुरू होके, और ये किस तरह से जो है वो नीचे जा रही हैं। एक्सीलेंट। Where they grow actually is quite different. I mean, other trees wouldn't actually be growing here, but also how they grow actually is very weird, I would say. So mangroves normally have flowers. After the flowers pollinated, these species we have, they grow a propagule. So this is known as the propagule, the mangrove seed to say. So usually it hangs vertical, and after it matures, it drops down vertically and sticks into the ground. After a month, it will sprout new leaves and roots, and then within 3 months, it will be like the small plants that we see here. But not all of them will grow, right? There's a theory says natural selection, right? So some of these would actually get much sunlight. There's so much competition. Some of them it's the opposite. Some of them they get so much space to grow, and some of them it's the opposite. Here, hand to hand, so everyone can see the seed.
And which one's most prolific? It's like a missile. The red one, yeah. The red one, of course, is very आके dominant. पास ऑन कर Actually, it can adapt more into this environment. It's very good at adapting in this environment. With मिसाइल की तरह salinity, गिरता है extreme weather Bunker sometimes, buster missile. okay, and very soft soil. Okay. So now it's illegal. Mangroves are protected by the government of Zanzibar for different reasons. The first one is because this is the habitat of the animals. Animal lives here. This includes crabs, fish, birds, monkeys. In the night we have bush babies here. You know bush babies, right? They are very related to the lemur from Madagascar. A good example is the fish, different species. Needlefish, species of sharks, worldwide are known to breed into the mangrove. A good example is the lemon sharks. Yeah, they swim from the ocean with the tides. When they arrive here, they spawn and lay eggs. When the eggs hatch to small fish, they remain here like a nursery. And when they grow, they go back to the ocean and the cycle continues. And last is that mangroves are protecting the coast of the island. First from soil erosion, but also from extreme weather like typhoon, tornadoes, even tsunami, by reducing the speed of the waves and winds from the ocean going to the island. So it's like a natural barrier. एक्सीलेंट Yes. यही है जी जो हमारे यहाँ अभी जो क्लाउड बर्स्ट हम कहते हैं जो KPK में हुआ है, बेसिकली यही जो बात इसने की है कि जो ये दरख्त हैं, ये जो ओशियन है और जो आपका रिवर्स हैं, जो पानी ये निकल के आगे जा रहा है और ये आपस में मिला रहा है, तो ये उसको सेव करते हैं सुनामी वगैरह से, फ्लड से और डिफरेंट जो है वो आफात से। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, नेचुरल वे है।